सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आए हम लोग वेदरिंग वेव्स में। आज देखते हैं कि क्या करना है। कहीं पे तो है। लास्ट कहाँ पे छोड़े थे मेरे को कुछ नहीं पता, बट कहीं तो है। अब देखते हैं कहाँ पहुंचे हैं और क्या क्या मिशन कर सकते हैं आज। जर्नी कंटिन्यू हो गया है, कहीं तो जाना है। पुलिस से बात कर लेते हैं, चार्लेट से। This ancient stone tablet bears inscriptions in the ancient Rinasita language, which translate roughly to मेरे को याद आ गया, मैं खेल रहा था कुछ दिन पहले। once whole, the divinity was rent by warring creeds. On this day shall I depart. On the grandest of days, the देखना maiden, पड़ेगा कौन सा है। crowned with golden laurel, याद तो नहीं आ shall रहा। commute. Seems to be some sort of prophecy. We might have to piece together the clues from both the stone tablet and the stained glass. These ancient relics that spawn tacit discords often carry special frequencies. Let's use the terminal sensor to reconstruct their frequencies. ठीक है, पर एंगल थोड़ा ऑफ है। Ancient stone tablet worn by the passage of time. ठीक है, चलो। ठीक है भाई, इन लोग का डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है पढ़ना है बस वही। Return to the truth form. कुछ तो था, यूजर सेंसर। अच्छा, विदाउट सेंसर के नहीं देगा क्या भाई? Seems like a new discovery. वापस से वही करना है एंशिएंट टैबलेट को। और कुछ है क्या यहाँ पे? लग तो नहीं रहा मेरे को। स्किप मारो तब तो क्या। मेरे को एक बॉक्स दिख रहा है। ऊपर से कितना ऊपर है? नहीं चढ़ पाएंगे। ओ भाई, ये वाला स्टाइल एक नंबर लगता है मेरे को। Seems like a new discovery. Cherish every gain. यूनियन 20 हो गया। यहाँ से पार हो पाएगा? क्राउच इसमें नहीं होता है। भूल गए इसमें क्राउच नहीं होता है। भैया होता भी वो शायद से, मेरे को तभी तक आइडिया नहीं है। तोड़ो फोड़ो, सेल क्रेडिट मिलेगा। ज्यादा बड़ा दीवार नहीं है। use the sensor to restore the frequency. ठीक है। The frequencies of these use the limited test to collect the steel block pieces.
ठीक है कर लेंगे। ठीक है समझ गए। चेंज करना पहले। लग गया क्या ये? अच्छा इधर उधर का पीस है, मतलब रैंडमली नहीं उठा के डाल सकते क्या? जहाँ का इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लगेगा। कहाँ का? नहीं नहीं ये यहाँ का नहीं है। जूम इन कर सकते हैं भाई क्रैक्स। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला का नहीं। अच्छा ऊपर वाला का भी नहीं है, नीचे वाले का ही लग रहा है। इधर साइड है ना, गलत गलत जगह पे मैं डाल रहा था इसलिए। This one shows a man in Primus attire, wielding a lantern-shaped relic to dispel shadows and the monsters within. नोटिस नहीं किया था मैंने, येलो कलर का ग्लो होता है अगर है तो। The last one seems to depict the moment a girl communes with the divinity of Renacita. और एक यहाँ पे है। This seems to depict the people of Renacita torn into two warring factions. ठीक है It's done. Now, let's see. हाँ देखते क्या होता है। Looks like these stained glass images recount a tale about the divinity. Wait, What is कौन सा it? डिफिकल्टी है? it's just... the content is rather peculiar. I'll translate कर it लो। for you. ट्रांसलेट करो तो समझ में आएगा हम लोगों को क्या है। Together with the inscriptions on the tablet, it should be... In the earliest days of Renacita, there were two divinities. दो को One डिविनिटीज rules था the ना। sky and the other the seas, eternally at odds with each other. हाँ ये Amidst वाला the मैंने turmoil सुना they था। wrought, Renacita evolved. In those times of legend, people waged war over their disparate fates. All this was ended by an unprecedented TD outbreak. The Dark Tide, so was it known. It ravaged विलनों a को पड़ा है great लग रहा part है, of इसका Renacita. इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। After the Dark Tide, Napoli, the first Primus, restored civilization from the ashes. He founded the Order to guide the broken Laguna. Yet, not long after, he went to be with the divinity. On his deathbed, he spoke to the believers. Once whole, the divinity was rent by warring creeds. From their holy wounds sprang the curse of Dark Tide. Though the woes of Renacita yet endure, the shattered divinity hath chosen their herald. On the grandest of days, the maiden, crowned with golden laurel, shall commune with the divinity. Thus she becomes the prophesied enlightened one, through whom Renacita's woes shall end. Then, the divinity shall return to its true form, and Renacita, under its glory, shall be a paradise, free of suffering. स्टोरी तो बढ़िया था।
Renacita has two divinities. I've never heard of such a thing. मेरे लिए भी पहली बार है. The Montelli family archives hold many documents on Renacita's past, yet none mentioned two divinities. In Raguna, the common belief has always been that Sentinel Imperator is the only divinity of Renacita. But if the images on the stained glass window were fabricated, why would the Order deface them and declare... There's only one कुछ explanation. होगा तभी ना एक छुपाया होगा. These are not fabrications, but buried truth. If this is indeed the Order's doing, we must leave here immediately. North of this tower is an island. It should be beyond their reach. Once we get there, you will discover another truth the Order has buried. चलो ना पता चलेगा टेंशन नहीं. Watch out! ओ भाई. अलग सीन चल रहा है. हाँ. Interesting. They're here even faster than I anticipated. ये लोग पीछे रखता है कभी. तुरंत पहुंच जाता है ये लोग. Apparently, the Order believes the images on the stained glass to be real. They wouldn't even hesitate to break their facade of neutrality, just to ensure we don't take the secrets out alive. भाई. मारो सबको मारो. इतना निकल तो निकल. ओ भाई. इसका रिकवर कैसे हो गया? लो. रिकवर कैसे हो गया इसका? डॉज नहीं कर पा रही है. Still recognize me? ओह, गलत साइड है. खत्म. ये कैरेक्टर अच्छा है. नेक्स्ट आउट ऐसी की वजह से. Keep it safe. अगर मिलेगा मेरे कैरेक्टर तो फाइट बढ़िया आएगा. डाउट है. खाली ट्रायल मिल रहा है खाली बस. ट्रायल एक तरह से ट्रायल के लिए मिला हुआ है. ग्राफिक्स भाई इसके तो एक नंबर है. एनिमेशन तो टॉप लेवल. अनफॉर्चुनेटली पर मेरा पीसी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए दो में खेलना पड़ता है. हाईएस्ट 60 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं. 60 FPS से ज़्यादा नहीं जाएगा आई थिंक शायद. आ गया बस. Who gave you the order? Look at what you've done. Distorting history. Usurping the Sentinel's authority and colluding with wretches. Who are your accomplices? The Fraxidus? The Phisalias? ये बताएगा. Well, I'm afraid I don't understand, Miss Carlotta. हाँ भाई तू Seems बन you ले. too are lost her. हाँ अच्छा. If you find yourself confused and desire the Sentinel's guidance, I would gladly इसको arrange. तो पीटना पड़ेगा भाई. मार के लोग करना पड़ेगा. So this is how you treat Seriously? those truth seekers? Please, lower your weapon. There is still room for discussion, is there not, Miss Carlotta? Carlotta. गलत पढ़ रहे थे बेटा से. ये ऑर्डर के बंदे सब ना. आए थे कहीं. Stand down. Enough Please, Dad. blood has been shed today. Imperator would not revel in senseless sacrifice. The pilgrim's sail is for the transgressors to seek rebirth, not for you to threaten our friends. Repent for your reckless words.
Forgive me, Brother Alessio. Brother, bhai. Ah, honored guest. You have been misinformed, as the truth is not what it seems. Why not hear the Sentinel's wisdom for yourself? भाई जो छुपाया Of ट्रूथ को course. सारा बोल रहा है. If Lord Yeah. Fenrico is the true enlightened one. However, the prophecy speaks of a maiden as the enlightened one. Is that why you destroyed the stained glass? To pass Fenrico off as the enlightened one? So he can seize the Sentinel's power and rule Raguna? कुछ तो करने वाला है. Stubborn people of little faith. You've surely been tempted by evil and swallowed its lies. देखा भाई ट्रिक. Lord Fenrico is the लोग- undeniable भाई evil enlightened बोल रहा one है. and will guide. Well, I see no point in Declare करेगा debating क्या? doctrine with you. Criminal हमको. Let's move on to a more concrete subject. Now, Miss Carlotta, which one do you think is more important to the Montelli family? Is it profit or bloodline? How? That's Uncle Capello's pendant. What did you do to him? Oh भाई. Good question. What did we do indeed? Wouldn't hand over this pendant, the emblem of his faith. But we managed to persuade him. Whether he should be deemed faithful now depends entirely on your actions. And you... भाई ब्लैकमेल किया जा रहा है भाई. My actions. What do you want me to do? Your ब्लैकमेल हो. Raise your weapon, faithful Carlotta. Choose wisely now. Where shall you aim? Whose heart will taste your bullet? भाई तो मेरे को कुछ अलग ही लग रहा है. यहाँ पे फील आ रहा है मेरे को कि मेरे तरफ आने वाला है गोली. लग रहा है मेरे को. नहीं 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 नहीं. अरे बहन नहीं. Good. You are a smart one, Miss Carlotta. भाई लेवल भी नहीं अपना उतना भाई. फेस भी नहीं कर पाएंगे इसको. Carlotta? नहीं तो लटन I'm नहीं है. ऐसा sorry. मत करो. Even though the time we shared was very memorable. लोल फिर भी लगेगा. बोल रही है फिर भी करेगी. बोल भी Excellent. It appears you've made the right choice, as any true Raganese would. Honoring blood and faith alike. Pull the trigger. End this transgressor's life. The Sentinel shall host a supreme banquet for you in the high heavens. कोई ट्रिक यूज कर लो भाई. नहीं तो फिर नहीं तो पक्का मर जाएंगे आप. लग रहा है भाई. Farewell. And may Oh you my. meet your friends, where it all ends. आ गया. वो सब कुछ दी थी मेरे को. याद आ गया पहले. भागने का मौका. You've disappointed me, Miss Carlotta. अच्छा मेरे को लगा बिट्रेयल हो जाएगा भाई इस बार में. इस बार भी क्या. पिछले बार तो हुआ नहीं था बट फिर भी एक्ट किया फिर. There's a saying in Raguna, even the finest bullet can miss. It was only a mistake. So be it. I shouldn't question your faith over such a mishap. Let us bear witness to the moment divine wrath descends from the heavens. That was close. I really thought the Maybe bullet was I- coming for us.
So, was it all part of your plan? We were improvising. Then you two sure have great chemistry. Anyway, those bad guys are still after us, so let's get out of here. Didn't Carlotta say something about an island up north? Let's go check it out. इसको नहीं किया ना एक्टिविटी उधर एक्टिविटी नहीं किया है उधर चेंज कर लेते हैं अपना टीम को थोड़ा आईसी को रहने देते हैं सबसे कोई इसको कर लेते हैं Ready to rumble. I will be there for everyone. As we Anything I can help you with? हाँ करवा सकते Now हैं that I've gotten used to it, this power feels robust and flexible. It does have something in common with my Lei Huang Xuan. और भी कोई है अभी जो इक्विप ना हुआ हो ये मैंने सबको देख के रखा हुआ है नहीं लगता है मारना पड़ेगा किसी को जाके ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया है इसको इक्विप करके देखता हूँ छोड़ो इसको ट्राई करते हैं Wait, heads up! Something huge is coming at us! Watch its flame! भाई Wait, मूव get to that clearing! मेरे को पड़ेगा अब भाई ऐसा क्यों खाली रोवर खाली दिया बिना फाइट की जाने नहीं देगा क्या ये लोग one with the sounds. विदाउट फाइट की तो जाने देगा नहीं इसे तू भी निकल यही भला इधर ही रहने में ये इतना ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना भाई डैमेज पड़ रहा है यार Sounds. इसमें बहुत स्लो मूवमेंट है हद से ज्यादा स्लो है जब मूव हो जा स्क्रीन मूव नहीं होगा ना मेरा कहाँ है ओ भाई बच गए मेरे को लग गया मेरा इससे में तो पता ही नहीं चलेगा मूवमेंट कहाँ हाँ टीम बचा लो ओ नहीं 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 लग गए वापस स्टार्ट करना पड़ेगा तो नहीं वापस से नहीं करना पड़ेगा मेरे को लगा वापस स्टार्ट करना पड़ेगा यार Leave it to me. अब भी नहीं चेंज कर सकते हैं
बचना पड़ेगा इससे भी बचना पड़ेगा। That timing, one with the sounds. हील भी नहीं कर सकते ना, अब लग तो रहा है कि हील भी नहीं कर सकते। हट जा भाई, हट जा। ऐसे मूवमेंट भी नहीं हो रहा है ऐसे में तो मूवमेंट भी नहीं हो रहा है और हील भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में। भाई लो आ गया भाई, कर लो काम तमाम। ये भी कुछ कर भाई। हाँ। पता पानी में सब मेहनत है, पानी में कौन सा हम लोग फेंक दे नीचे जगह में पता नहीं चलेगा। अभी तक मेरे को पता है अभी का क्या काम है, अभी तक नहीं पता मेरे को। अभी तक तो कोई इवेंट के थ्रू मिला था मेरे को, आइडिया नहीं मेरे को इवेंट यूज किया अभी तक। ओ भाई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया हुआ। हेलोविन पे है क्या ये पूरा थीम? मेरे को अभी तक आइडिया नहीं हुआ। Don't be scared. Paro is just saying hi. She seems to fancy you. आगे क्या हो? पेरू नाम एकदम मस्त रखते हैं लोग। I'm not exactly one for formal introductions, Paro. साय लग रहा है। साय कैरेक्टर है ये तो। I know this isn't the first time seeing them. इसको तो याद ही नहीं है। ये उसने जो कहते हैं। Hello, I'm Lucia. Lucia. We've met before on Brand's ship. I was in this box. कब मिले मेरे को तो आइडिया नहीं है भाई। यही जानना है। This is Paro, the actual owner of the box. Paro takes good care of me and lets me hang out in it all the time. इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है हम लोग की जैसा, मेरे जैसा मतलब फुल इंट्रोवर्ट। I've never seen Paro warm up to someone so quickly. It must be something in your frequency that it finds interesting. मैंने कैरेक्टर अपना भाई भाई। Anyway, what brings you to this beach? It's not exactly a place for हाँ stroll. ड्रैगन से फाइट करते करते यहाँ नीचे फाइट तो नहीं किए, पहले वेट में उड़ा दिया नीचे एकदम। यदि कोई काम का नहीं है बस। ठीक है बता देते रुचिया So वरिया। you were attacked by that dragon and fell off the bridge. हाँ सही पकड़े मैडम जी। भाई ऑटो पे नहीं है क्या? ऑटो पे लगा देते थोड़ा सा, स्टोरी प्ले भी हो जाएगा। I'm guessing it was Abby who ओह saved you. अच्छा ये भी बचाया था। Probably exhausted itself and retreated मेरे back को लगा into ये your तो body to यूजलेस है rest. अभी। सॉरी अभी भाई। I can still sense Abby's भाई एक frequency, बहन अभी तो वो भी नहीं पता मेरे को, even if it's faint. नाम से लग रहा है अभी तो मेरे को लगा लड़का What है। triggered Abby to come out? Something it could absorb? But then, why didn't it work? That dragon's behavior is odd. It never leaves its territory. ऑर्डर का काम है, ऑर्डर वालों ने कुछ कांड किया होगा तभी ना। हाँ ये पूछ सकते क्या? Long ago, this place was a sacred spot for the Order's pilgrims. हाँ वही बोले ना, The ऑर्डर्स dark का tide काम hit, है। and all those reverberations left behind
twisted things up. The Orders का remnant क्या? clouds from the sea of clouds drew hordes of tacit discords here. Now, their whispers fill the air, turning this once holy place of pilgrimage into the penitent's end. अच्छा. Secret place में. This dragon of Sacred. dirge My mistake. is a local तो थोड़ा tacit pronunciation में discord. बहुत दिक्कत होता है इसलिए. It grows by feeding on the others. We were supposed to pick you up like Miss Carlotta planned, but things went sideways. कोई दिक्कत The नहीं है. truth Mr. Carlotta wants to show you lies somewhere on the aisle. But this is not the best place to talk. The mist is हाँ, पहले thickening, निकलते हैं यहाँ से. and rain is coming. The mist is dangerous here. It traps reverberations, and when it collects enough, they quickly form into tacit discords. आएंगे कभी इधर भी लेवल अप होने से पहले. I mean Brant. He went into the mist to rescue people, but he hasn't returned. अच्छा. We think he might be in danger. इसको भी रिस्क पे नहीं जाना पड़ेगा ना. I plan to go find him. Once I'm in the mist, my frequency will draw the creepies and crawlies away. So you'll बात be तो रहा है. safe here. रिस्क करने जाना पड़ेगा. Just in case, take this to mask your frequency and defend yourself. Ta-da! Fireworks pistol. One shot and it'll send the tacit discords packing. अच्छा. मैंने तो अभी तक यूज ही नहीं किया यार वैसे कैरेक्टर को. बेसिक. हाँ भाई बात सही है. All right, try this instead. Ta-da! Captain's Parlay Saber. sword या फिर लॉन्ग sword मिलेगा. हाँ हाँ ये काम कर सकता है. Use it to protect yourself. Our troop will bring you to our base soon and tell you the truth we've uncovered. I'll join you once I find Brant. ठीक है देख लेंगे क्या दिक्कत है. I want to see the truth. ठीक है. But the mist is dangerous. वो तो पता है भाई. डेंजरस तो है. All right, fine. It's better you see it for yourself. I'll be glad you don't have to fend for yourself alone. See that lighthouse? करना तो पड़ेगा भैया. अकेले It's ही the करना पड़ेगा. only safe place in the mist. We'll head there. Brant might have taken shelter there too. Once we find him, we'll find the truth you're after. ठीक है. चलो कोई नया मिशन मिला. The area up ahead is where the sea mist is thickest. Try to avoid the dark phantoms in the mist. सारे They could पिस्टल turn लेना into चाहिए था. tacit discords at any moment. We'll improvise. हाँ मैंने क्लोज कॉम्बैट है ये ना. I'll warm up the crowd. ओ भाई. उठता है ना. क्या करना है इन द वाइल्ड. जाना स्वेयर में this is also golden create inside actually is doing the spice. ठीक है.
पहले मॉन्स्टर लोग काम तमाम करेंगे। Tacit discords. Watch out. What? I can't control my forte. The high levels of corrupted remnant energy in the mist are disrupting our frequency stability. अच्छा, I can help with that. See, fighting here is a bad idea. Let's just try to avoid any threats for now. पर मेरे को भाई लेवल अप होना था यार। ऑप्टेन कर ली ना हो, जितना हो सके उतना उठा लेंगे रास्ता। नहीं हो रहा कुछ ना, कुछ तो लिखा हुआ था। Find a way out of the mist. Okay. नहीं क्रॉस कर सकते ना यहाँ से भी। मेरे को देखना पड़ेगा। ये नहीं, इधर भी नहीं, ये वाला। We'll improvise. फाइट नहीं करना है, बट फिर भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। चाहे लास्ट होते हैं ना, लास्ट में ऑफ हो जाते हैं, नहीं जा सकते। कुछ तो बोला था यहाँ पे, हम सही से पढ़े नहीं। Find a way to. Let's see. Will flight work? No. ये सब कलेक्ट करके मेरे को कुछ तो करना है सबसे। हाँ, ले भाई आ गया ड्रैगन। इसी का कमी था। दो को तो कलेक्ट कर चुका हूँ अभी तक मैं। यहाँ वाला एक कलेक्ट किया था ना। ओके चलो, पानी जाना था क्या, या फिर उधर में कोई बोट रखा हुआ है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। Play with me. Look for me. ये कौन है यार? Don't worry. They're just reverberations. अच्छा, Potential reverberation. tacit discords in the making. Some of them are actually our friends. We can follow them to find a way out. कुछ स्टेप Come, टॉस। play with me. Look for me. I'm here. ठीक है, आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ स्टेप बजाओ यार इसका। हाँ, ये तो ड्रैगन का आवाज था क्या? ये भाई ये मत बोलना, उसको से फाइट करना पड़ेगा। खास करके रोवर कैरेक्टर रहेगा तो फिर मैं नहीं करूँगा, पहले बता दिया हूँ। निकल लेंगे पहले। भाई मस्त दिख रहा है सही में। Did it lead us this way because it sensed the dragon? Possibly. Phantoms are sensitive to frequencies, so navigating the mist is second nature for them. The game isn't over. मदद कर रहे हैं हम लोग का। Come quickly. I
think I've figured out what they're doing. We'll be out of the mist soon. हाँ हो भी सकता है, मजबूर करने की कोशिश कर रहा है वो, तो फ्रेंड्स निकल जाए। ये इधर से हम लोग आए थे क्या? ये करना ही पड़ेगा क्या? अच्छा डेंजर है, केयरफुल होके जाना है। नहीं डिस्कॉर्ड है क्या कोई, या मैसेज कोई छोड़ा है? Ruchia, अच्छा गोल्डन you फैंटम, found me. गोल्डन फैंटम आ I'll गया always ड्रैगन। find you, but maybe don't do this again next time. Why? Isn't this your favorite game? I wanted to play with you. I know, but as your friend, I worry about your safety. My friend? Excuse me. Are you Rochia's friend? हाँ बोल देते हैं, शायद शायद भाई। Ah, how wonderful. अच्छा ठीक है, You're not alone anymore, Rochia. अरे छोड़ के जाएगा? अच्छा Yes, I have friends now. अगर नहीं बोलते तो क्या होता? I'm so happy for you. कुछ और सीनियर हो कैसा करना है तो लग रहा है। All is well. Fly to the high heavens. We are born free, and our souls will soar even in death. और फ्रेंड्स करते हैं। Golden phantoms are reverberations, mixed with the frequencies left behind by people who've passed away. अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं घोस्ट, स्पिरिट्स बोल सकते हैं। When someone dies, the reverberations linger. Usually, they merge into the same cacophony of frequencies that spawns tacit discords. एक तरह से स्पिरिट्स बोल सकते हैं लोग, उस पर्सन का But स्पिरिट्स है। sometimes, a trace of their final will remains, and the mist shapes this into phantoms. भाई पता नहीं यार, स्टार्ट किया बस और कंटिन्यू किया, अभी तक वही चल रहा है। This lingering will helps the phantoms resist अभी becoming तक चेक नहीं किया tacit कौन सा क्वेस्ट discords कर रहा and हूँ, instead guide the lost through the mist. बस गेम को एंजॉय करते हैं, कंटिन्यू चल रहा है। If the mist clears, they'll vanish. If the mist lingers, their fate is sealed. It will only be a matter of time before they merge with other reverberations and become यही है tacit भाई, discords. स्टोरी गेम का यही तो मजा आया। बस Their कोई एक final स्टोरी पकड़ो frequencies tend या to फिर नहीं cling to पकड़ोगे तो certain फिर भी objects. ऐसे हो जाता है Like this और Lucianite here. कंटिन्यू चलते रहता है। I collect them as proof that they once lived. हाँ हो सकता है, पर तुम्हारा तो सर्वर अलग था ना भाई। Otherwise, the dragon will devour every last trace of their frequency. The mist is thinning. मवीन भाई तुम्हारा तो, तुम उस दिन That बोल रहे थे stranded मेरे को ship कि ahead looks अलग like- तुम्हारा सर्वर है। देखते हैं हम।
अब देख लो कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, साइड में लिखा हुआ है व्हाट यस्टरडे फिफ्थ टुडे फ्लोटिंग सिंक्स का है। एक क्वेश्चन तो ये चल रहा है। आई थिंक लगता है मुझे तो भाई तुमने कर ही लिया होगा ये तो। A pilgrim sail. Why is it here? थोड़ा मैं लेट हूँ। In Raguna, those who break the law are sent to the Order Tribunal for sentencing. Those who violate the sacred doctrines are branded as fools and sent away on the pilgrim's sail. It's said that when the first dark tide ravaged Renacida, the first Primus followed the currents on a rickety boat and met the Sentinel in person. That's where the pilgrim's sail tradition came from. Now the fools retrace the Primus's journey, reflecting on their mistakes along the way. हाँ ये तो भाई है, कोई अपना मतलब उतना मेहनत करके करेगा बनाएगा फिर There's इसके a बाद strong कोई एक्सचेंज नहीं करने को undercurrent होता है around ना the सब। Isle, likely caused by that first dark tide. सुनो ना एक काम करो, अगर साथ में खेलना है तो एक आईडी बना लो, मतलब सर्वर बना लो तुम भी ऐसे ही कर, आ जाओ उसी में No reverberations on the ship. साथ में nor खेलेंगे इसके in the बाद। mist. The people must have escaped. But with the mist, क्या हुआ इसको, This पैरों का way. अब क्या हुआ? Head to the lighthouse. I hear the sounds of fighting. Watch out. Tacit discords are gathering. भाई लोग जो भी देख रहे हो यार लाइक कर देना स्ट्रीम को। Intermission is over. Time to let the ghosts have their moment on stage. Come on then. Let the flames of battle ignite our souls. Wait, is that Brant? Only Brant would call them ghosts with that kind of flair. It must be him. But I can't tell where he is in the mist. Anyway, let's deal with the trouble here first before we go look for him. ठीक है चलो डील करते हैं लोग से भाई, कोई नहीं डॉज के मूव कर, चलो यहाँ से चलते हैं, पहुँच गए ना। The show's over, ghosts. ओके Time to take your कोई दिक्कत final नहीं है, bow. अगर तुम चाहते हो भाई तो मैं बना सकता हूँ, अमेरिकन सर्वर का Watch बना your सकता हूँ। back. A marvelous shot. You've earned your stripes, first mate. पर मेरे You're को भी टाइम welcome. लग जाएगा। But if you tilted your head just 10 centimeters to the left, यूनियन it wouldn't have been the discords बहुत head that बहुत got पीछे हो popped. जाएगा ना, मेरी यूनियन It'd साथ में be खेल नहीं yours. पाएंगे, वर्ल्ड भी बहुत कम का रहेगा फिर। अच्छा मैं देखता हूँ अगर होगा ना तो मैं ही एक Not on your अमेरिकन watch. सर्वर बना लेता हूँ ना Besides, उसमें। fortune always smiles on me. Except in bets. And we've crossed paths with the rover again. Can't get luckier than that. We shouldn't have let him get caught up in this mess. कोई He was दिक्कत नहीं है भाई, worried वैसे about अकेले us में and उतना Sissy मजा नहीं and आता Tommy. यार, कोई साथ में रहेगा तो फिर खेलने में भी मजा आएगा। ये तो Is ऐसे that so? Then our gratitude to you is even greater for your timely aid. To find the brightest truth, one must delve into the deepest shadows. Such bravery deserves to be hailed, my friend. अच्छा ठीक है, देखो अगर हो Where पाता is तो everyone अच्छा on बात है। Pilgrim's Sail? I was patrolling the coast earlier when I saw तो their मैं ship पूछना drifting चाहता into था the कि mist. मतलब Time अमेरिकन was सर्वर against तुमने us, चूज क्यों so I किया, departed मेरे को ये alone समझ without में नहीं आ alerting रहा the है। crew. आई थिंक Thank जहाँ you. तक मेरे को पता है मैक्सिमम बंदे लोग तो Don't एशिया be या फिर afraid. साउथ You're ईस्ट एशिया safe ही with चूज us. करते हैं। You've got some skill, you know, holding your own for so long in a trial against the Tacit Discords. Trial? I don't buy into the Order's nonsense. I've worked hard all my life and stayed true to the Order's teachings about forsaking earthly pleasures for divine favor. And what do I get in return? Heavier taxes. अच्छा थैंक्स, हमको लगा नथिंग बोलेगा। When pirates ransacked my merchant fleet, leaving me with nothing, I turned to the Order for help. They said it was a divine trial and left me to rot.
आज I बोल रहे हैं stood कुछ before the इंडियन दोस्तों से, sentient मतलब statue, asking if तो my इंडिया से suffering बाहर was के हो क्या really their will. माविन भाई? But all I got was silence. लग तो रहा है शायद. Why should I wait for peace in the afterlife when I could be living for today? How is that a crime? As for salvation, I don't believe in it. And I certainly don't need it. Here's a proposal. How about joining our troop? We are wanderers adrift upon the seas. Or perhaps you're more familiar with the name, the Troop of Fools? The Troop of Fools? Could it be? Yes, we are, like you, by the Order's decree, marked as fools. Fools on the pilgrim sail Oh. often meet their हाँ, तब demise in सही a है. storm, or they're कोई swallowed by दिक्कत the नहीं है. waves. Even if they do survive, they still face hunger, thirst, and the हाँ, मैं भी unforgiving तो वही wrath सेम of करता nature. अगर मेरे दोस्तों को सजेस्ट होता तो. Maybe it's जैसे एक यहाँ luck पे है that मेरा brought फ्रेंड, you वो here भी so खेल रहा है, swiftly. स्टार्ट करने वाला है And बोला था, unharmed तो at मैंने भी that. इसको सजेस्ट किया कि भाई सेम Look सर्वर में आ around. जाओ. This is all that सेम सर्वर remains में of रहेगा the तो खेल pilgrim पाएंगे आसानी sail. से. This is always their final destination, where the fools meet their end. Yes, the pilgrimage is nothing but a banishment in disguise. The path to salvation they speak of हाँ doesn't हाँ, exist. तुमने बताया था, तो जिस तरह तुम बोले ना, Otherwise, तो मेरे को लगा कोई How शायद could this बाहर से once होगा. sacred place now look like such a hellish wasteland? Wait. Sacred place? No wonder the others were talking about it on the ship. They believed the Order's promise that prayers at the sacrificial arena would grant them forgiveness. They must be heading up the mountain now. I didn't expect their faith to lead them that far. स्टोरी के हम लोग और Only लीड they कर knew जा it रहे was just one of the Order's lies. Captain! First mate! We're here to help! हैं. पायलट्स बनेंगे लग रहा है. More hands make light work. कहानी I पायलट्स की called in तरफ. some help to हाँ. escort him back to the base once the mist cleared. Ah, the first mate's foresight is unmatched. Then the three of us can head up the mountain. But beware, my friend. By the end of this pilgrimage, you will witness the Order's cruelest deceit. The dangers ahead will only intensify. नीचे हो. Strike lines. Please save them. I hope it's not too late. Don't worry. कोई दिक्कत नहीं There's है. more to our troop than you think. Reinforcement ना. कौन है? अच्छा ये. This wing ray can fly us up the mountain. You two go first. You'll find I'm very convenient to bring along. बॉक्स में पैक. All right then. All hands, prepare to ascend. सही है, बॉक्स में पैक करो, चल दो. चलो. कहाँ जाना कहाँ था भाई, मेरे को छोड़ के चल दिया. ये मूव कर ले भाई. ये तो अटक गया. अच्छा, वही सोचो हुआ क्या. यहाँ पे नेट इशू हो रहा है यार. कहाँ पहुंचे होंगे पता नहीं. This is a testament to my connection with the world around me. ये नेट And इशू it's क्यों very होने लगा much my अचानक से. companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. तो गंदा नेट इशू होने लगता ना, अचानक से ड्रॉप होगा एकदम स्ट्रीम की बीच में. हाँ हाँ, चार गया. तो घुमा घुमा के लेके जा रहा है, सीधा उड़ के नहीं जा सकता था ये. भाई सीन तो एक नंबर है. व्यू मतलब ऊपर से व्यू मस्त है एकदम. आउट हमको होता है दूर लेके जाएगा. हाँ, ये से फेंक देगा, बोला तो जाओ.
to discords incoming. Stay alert, everyone. हाँ ठीक है, डिस्कॉर्ड की तरफ नहीं जाना अभी, और जाके एक्टिवेट करेंगे टावर। पहले प्रायोरिटी टावर लोग हैं, मैप खोलेंगे पहले, इसके बाद जाएंगे डिस्कॉर्ड के बाद। एक्टिवेट हो गया है। ये कौन सा जगह है, कोई आइडिया नहीं है। बस गेम ओपन किया, कोई इवेंट चल रहा था, डायरेक्ट मैंने उस पर शिफ्ट हो गया बस। हाँ ये रहा हम लोग का मेन सिटी। इधर भी एक्सप्लोर ही नहीं किया अभी तक मैंने, जैसा कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता कभी खेलने का सही से। कुछ एग्स है क्या ये, पीसीज? कुछ और ही कुछ उठा है। खा लेता, पता नहीं क्या खावा है। अभी तो कुछ क्राफ्ट ही नहीं किया मैंने अभी तक कुछ इसका। Leave it to me. निकल Hopefully निकल। this helps. Checkmate. चांस है तो डायरेक्ट खत्म करो सीधा रहा। These are human footprints. Looks like they're heading to the arena. This is the only way up. But Be gone, you vexing wretches! the sacrificial arena is right there. Let's take them Oh down my. in one blow! ये वर्क हुआ क्या अभी? Hopefully this helps. तू चमगादड़ निकल, पहले फुर्सत में निकल। पीछे गया क्या? फिनिश हो गया इतना जल्दी? लगा नहीं मेरे को इतना जल्दी फिनिश हो जाएगा। बैकग्राउंड में इतना म्यूजिक बजता है ना एकदम। ओ भाई ड्रैगन से फेस करा दिया भाई। 40 से नीचे लगना भाई प्लीज, 40 से नीचे रहना। तो 40 से ऊपर रह गया तो मेरा लग जाएंगे। Oh, divinity above, please have mercy on me. 40 से नीचे रहना प्लीज। Is this some kind of test for me? I see. 40 से नीचे नहीं रहा No तो मेरे matter लग how जाएंगे। harsh the punishment, I'll take it. Even if... 40 से नीचे ही रहना। even if it means death. हाँ We've never done anything that warrants paying with our lives. लो भाई ये रेंडर होने लग गया मेरा। फिर नेट सही चल रहा है क्या? नहीं चल रहा शायद इसी वजह से However, रेंडर होने लगा वापस। in the face of danger and adversity, the stage is set for our grandest act. FPS मेरा ड्रॉप हो रहा है भाई। अब Grant, you handle the tacit क्यों भाई, discords. क्यों ऐसा I've क्यों got कर the रहे हो? dragon. चलो सही हो गया। Of course. But उम्मीद with तो all कर due रहे हैं respect, FPS ड्रॉप में। shouldn't the captain be the one giving the orders? Just playing to our strengths. Take it, or I'll spill the beans about your wine stash. FPS सही हो गया। Why, aye, first mate. मिलके हमला It's कर time देता। to pay for what you've done, Dragon of Dirge. ड्रैगन ऑफ डर्च। हमको लगा डर्क बोलेगी। Leave it to me. ए भाई ए भाई ए भाई ए
रे मौका तो दो भाई, अभी तक हम देख ही रहे थे चैट यार, तुम स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट। भागो 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 भागो, पीछे पीछे तो पीछे। ओ भाई टेल अटैक, खड़ा हो गया तू। Down with the curtain. बहुत कम लेवल का है, इस हिसाब से बोलो तुम्हें। Joint operation. Overwhelming power. खत्म खत्म तो नहीं हमारे इतने जल्दी। कोई एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है क्या? एब्री हाँ एब्स क्यूट तो है। ठीक है। Of course. You think that little lizard could take me down? I just took a nap after eating its frequency. एब्री एक नंबर हाई। But seriously, that was close. The fire it breathed almost singed your hair. Good thing I was here to back you up. हाँ भाई, लाइफ सेवर है तू एब्री। As soon as I realized it was a tacit discord, I went for it and ate its frequency. Piece of cake. But I gotta say, it was a pretty hefty bite. I swear, I chewed it up, but it was hard to swallow. It wasn't the taste, you know? More like my digestion's been a mess lately. लास्ट वाला चीज करते हैं। गुस्सा That's not the point. The real deal is I found something crazy in its frequency. भाई टीज करने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है। Experienced empathy with the tacit discord back in Jinzhou, right? How about trying that again with this guy? Trust me, this could be our big break. ठीक है, अभी तेरे पे ट्रस्ट है, फुल ट्रस्ट। Gehenna, a wretched soul mourned by none. You are reborn to fulfill our sacred rite. Illuminate the path of salvation. Become the fiery hand of judgment, purging all transgressions. Cleanse every soul swayed by their own indulgence. Those who cannot withstand the trial by fire shall forever be barred from our pure land. See, I wasn't lying. हाँ ठीक है अभी। Control the dragon, हाँ। तभी तो अटैक किया वो। Tacit Discord's frequencies are perpetually fading, inching toward their end. Their only way to maintain their existence is to consume other frequencies as food. The dark tide and mist enveloping this isle have drawn in countless Tacit Discords. Their frequencies should have been enough to feed the dragon. हाँ तो ऑर्डर का काम होगा। If what you saw is true, then the Order must have used some trick to control the dragon, making its frequency fade away faster than it should. इसलिए इतना वीक था भाई। मेरे को लगा कि लगभग होना चाहिए 40 के आसपास होना चाहिए ड्रैगन। They could be responsible for why the dragon began attacking all living beings, including humans. In time, it ended up becoming a harbinger of death. I found this during the previous battle.
ए भाई ये पैटर्न तो Seems कहीं the देखा देखा लग रहा है. Fraxidus had their hand in this case as well. So you know them too. हाँ भाई. Seems we have much to discuss. Our troop usually earns a living by performing on the nearby islands. Sometimes we take on escort missions for merchant ships as well. That's how we first got acquainted with the Fraxidus. At first, they were just lurking about, raiding ships. But as the Carnival drew near, their actions grew suspicious. We noticed them lingering around a certain sea. Remember Cetus the Tidebreaker? The creature that attacked you when we first met? After we parted ways, we went searching for it to find out what had gone wrong. This is what we found on its tail, another Lycoris. Alas, the Tidebreaker slipped away into the deep beyond our reach. Still, इसी वजह से लोग कंट्रोल कर पाता है. No doubt. The Fraxidus is behind its strange behavior. We saw what they did to the dragon. The Cetus's violent outburst must be their doing as well. Sentinel हो सकता है. They say the Carnival is a ceremony to resonate with the Sentinel. Those who claim the laurel may be graced with a miracle, a direct communion with the divine. At first, we thought you were merely a curious traveler, intrigued by the Carnival and our Sentinel. But now, seeing how far you've come, there's more to your quest, isn't there? Our troop has always sought the laurel, and we won't sit back while others threaten the Carnival. If they're your foes, then our paths align. Remember I mentioned one of ours who once claimed the laurel? He wasn't with us when we first met. But once we reach our base, you can speak with him about the Sentinel. It won't be long now. After such an adventure, a well-earned rest awaits. अच्छा कोई दिक्कत नहीं है. ड्रैगन में कोई दिक्कत नहीं है. सब उड़ने वाला ड्रैगन ही होता है. हाँ अब इधर लैपटॉप में खेल रहा हूँ. Testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now. और मेरा नेट इशू बहुत हो रहा है. कार लेके जा रहा है नीचे. इसको लेते हैं. यहाँ पे मैंने बोर्ड देखा था आज में. छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बिना बोर्ड के जाएंगे. Hopefully this helps. मिलने जाना है हमको तरफ से आगे. Here we are, ladies and gentlemen.
allow me to present to you our sanctuary. A haven for all the surviving fools at the edge of the world. अच्छा है. It is, my friend. We built this place from the ground up, and I dare say it's a triumph worthy of the ages. The mist does shield us from the Order, but it brings its own set of problems. Precisely why we must tackle its effects without delay. By the way, if you'd like to speak with Mr. Bardolino, our laureate, you'll find his tent deep within the base. ठीक है, बात कर लेंगे. Feel free to talk to the others while we handle our tasks. We'll catch up once we're done. प्रॉपर रास्ता. हाँ रास्ता. तो प्रॉपर रास्ता तो कोई जाता नहीं है. शॉर्टकट मार लेता है हमेशा. दादाजी निकले. Relax, young man. Life's only just unfurling its sails for you. Why sit there like one of those dour statues in the Order's halls? Don't be afraid to show a little spark. I was just thinking about my future. सेम भाई. Is Raguna truly क्या होगा lost आगे forever? देखना पड़ेगा. अब मैं ही सोच रहा हूँ फ्यूचर के बारे में. Some have found मानी their ये way ओवर back, का रोवर का but फ्यूचर के under बारे the में. Order's watchful eye. Is that ऐसा ऐसा really कांड हो रहा है सुधा. a life without freedom? बैकग्राउंड म्यूजिक मस्त है भाई. Listen, you don't need a grand stage to leave your mark. A true Raganese can turn even a ragged tent into the finest theatre. That's बोर what तो I नहीं look होता at. सही में. I might be an old man now, but don't let that fool you. I was once crowned with the laurel, you know. अच्छा ठीक है दादाजी मान लेते हैं आपका बात को. You? Are you Mr. Bardolino? Bardolino. Lino. In the flesh. Did anything unusual happen to you when you were at Tugbari? ठीक है पूछ लेते हैं. As I took my final bow on stage, a bright light pierced through the clouds, shining down from the sky. And then, a radiant laurel descended upon me, and I heard a voice. It was the Sentinel's voice, ringing in my head. कहानी का स्टोरी में भी मिला था. रोवर भी सेंटिनल से मिला. The ultimate philosophical. उसी को फ्लैशबैक आया था सो. What should I eat tonight? उस टाइम मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा था बट स्टार्टिंग के टाइम में मैंने ये मतलब सुना था इस कहानी. And they answered, the body is the temple of the mind. To keep your mind sharp, do consume healthy food, such as the loris salad. अभी तक कुछ बनाया नहीं है मैंने तो. लग रहा है इसमें सब बनाना पड़ेगा. Loris salad? I was baffled, and the meaning still eludes me to this very day. I've never been quick-witted though, and the Order's doctrines never quite took hold. Acting, however, that is where my true passion lies. फर्स्ट टाइम हम लोग कुकिंग करेंगे लग रहा है. सेंटिनल पर्सनल फेवरेट. हाँ ये वॉसिन बोल सकते हैं. सेंटिनल का पर्सनल फेवरेट होगा ऐसे कोई ऐसा है लोग. But why did a blessed laureate like you get banished by the Order? Back when I won the laurel, Raguna was led by the Holy Maiden. She promoted all sorts of grand celebrations during the Carnival, an unceasing tide of revelry. Stages sprang up on every corner of the city, performances dancing through the streets, and shops adorned in vibrant hues. Even on rainy nights, you could still hear music playing in the square. Some performers wove their critiques into their acts,
lights. Sharp as she Holy was, maiden. the Holy Maiden noticed. She refined city policy with each whisper of dissent. Ah, those were the golden days, my friend. हाँ दादाजी The Holy आपको Maiden तो once भाई said, enjoy if she किए were- पूरा. And then she really did leave us. The current Primus took her place, and in the Sure. name of mourning the Holy Maiden, issued all sorts of bans on the Carnival. But is that really what she would have wanted? The Order's grip tightened, and the Carnival performances were reduced to dull, monotonous इसीलिए पूरा shadows शांत of their शांत fallen भाई. selves. इन लोगों का जगह ऐसा नहीं होगा मतलब वही कहानी बता रहे थे चचा चचा दादाजी. One year, I strung a wire from a gondola to the top of the clock tower in Liberty Square, and another from the tower to the Thessalia's mansion. Then, I disguised myself as one of the LaGuardia to fool the acolytes, and climbed to the roof along the wire. Midway through the Order's performance, I hopped on a wing ray with a cloudcaster, showering the entire city with flowers. भाई दादाजी डरी तो थे अपने जमाने के It was a टाइम में. magnificent sight. The wingray soared higher than the acolytes could reach. They couldn't do anything but watch golden pink petals rain from the sky for 3 whole days. दादाजी भाई They डरी तो struggled उस to टाइम clean up the मतलब flowers from the जवानी में. streets, and it took a downpour to wash them all away. और That रास्ते पे जाके cloudcaster, समझ रहे हैं ऐसा काम adapted करना. from a music van, became the prototype for the one we use on stage today. But that's all in the past. To this day, I'm still not sure what crime they pinned on me. Maybe walking the wire without protection. Makes sense. Anyway, I'm just an old relic now. But you lot, you're the हाँ main भाई characters मैं भी of करूँगा this पहले tale. स्टोरी तो पहले सुनने दो यार. Facing down स्टोरी every बताएगा monster तब ना दादाजी की with क्या है कि fire in नहीं. your bellies. स्किप करना तो कर सकता हूँ ऐसा बात नहीं है. But isn't our fate already sealed? Without the so-called salvation स्टोरी the गेम का Order यही तो है preaches, कि बिना स्टोरी के we're doomed to कैसे our करें आगे. banishment. वैसे करेगा कर सकता हूँ. Just बट स्टोरी में lost मजा आ रहा है. souls dying in obscurity. इसीलिए. Life is short, and we weren't born just to atone. The Order may banish us, but they can't take away our कोई right to दिक्कत नहीं है. death is one of many possible ends. They want स्पीड to अप कर members देते हैं of कोई one day. दिक्कत नहीं है. That मजा आ रहा था स्टोरी में. भाई दादाजी अपना जवानी के टाइम का सुना रहे थे कहानी. What say you, Brad? Do you like this stage Bitch. design? It could be used for this year's carnival. भाई दादाजी अभी भी डैरिंग है भाई. मानना पड़ेगा. ठीक है वाटर ड्रिंक करते हैं और क्या. Our little chat reminded me of those good old days. So why not relive that scene I just mentioned? हाँ I हाँ still भाई दादाजी remember करो that भाई. famous line. Even without wings, we can still soar to the heavens. Now that you mention it, that is a very good question. बैकग्राउंड म्यूजिक और दादाजी का एक नंबर. भाई Please don't mind him. We like our performances big and bold, after all. कुछ होने वाला लग रहा है. That fight with the dragon probably messed with the mountain's stability. If Bardolino keeps moving around up there, it could get dangerous. We need to find a way to get him down, and fast. बलून फोड़ देते We सीधा बात. might need your help with this. Tara should have some useful items in her box. सिंपल काम. दादाजी का
We've got a cloudcaster that can conjure up some fluffy cloud cushions. They'd make the perfect stairs to reach Mr. Bartolino or catch him for a soft landing. अच्छा But some of its parts have been borrowed by other troop members. members ठीक है हम लोग को अलग तालाब तो यहाँ पे था क्या क्या नीचे में हम लोग को पार्ट्स लेना पड़ेगा ना यहाँ वहाँ से भाई जल्दी जल्दी करो दादा अभी Sailors cheer as hearts ignite. Soon we'll break these chains so tight. हाँ ठीक है सबसे डायरेक्ट आगे करना है इधर तो घुमाना नहीं पड़ता Oh, I use its base as a desk. Our first mate lent it to me so I could write more. Here it हाँ is. ठीक है भाई जल्दी जल्दी कर रहा है ठीक है मिल गया हम लोग को ये क्या यूज कर रही है कौन सा पार्ट यूज कर रही है हाँ टीना ठीक है I'd rather be a wild flower, हाँ ठीक है टीना ignored by all. A बाद में बात करेंगे cloudcaster. It does ring a bell. Here, the resonance unit. It helps me find the right pitch and rhythm. Works like a charm. You should give it a try too. ठीक है दे देंगे कोई दिक्कत नहीं बाद में भी लाल जी को बचाना है बहुत प्रायोरिटी दादाजी है वो पानी में नहीं Come on, fish. Come to my net. Yeah, I borrowed the reel for me fishing rod. भाई We दे दे scavenge all sorts of stuff from the beach and fix them up as needed. Nothing goes to waste. Don't be fooled by appearances. This stuff can be pretty. हाँ ठीक है चलो दे दिया Good. We have all the parts. अब बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है रिपेयर कर लिया रुकिए Everything's set for takeoff. Let's position a cloud cushion beneath Mr. Bartolino. Then we'll pop the balloons and bring him down safely. Although we might need a bigger cushion. The cloudcaster's resonance unit responds to song. The louder our singing, the more powerful the effect. In that case... All right, friends, old and new. Come and join this sing-along. सिंगिंग कंपटीशन कराएगा क्या अब तो मस्त रहता है अब जाना पड़ेगा हम लोग को इसको Wind guide me. अच्छा वैसे शूट कर सकते हैं ना मेरे पास कोई ऐसा कैरेक्टर है जो शूट करता हुआ शुद्ध रेस्क्यू ठीक है देखना पड़ेगा I will be there for everyone. I will be there for everyone as we head toward our ship. Another day, another heroic me. इसको भी ऐसे ही कर ही देते हैं I can feel the power in the flames rising. Now we're going to create a team जो हमको मदद करे You can दादाजी count को on me. उतारने में Bullseye! How about showing off that aim again with the rest of the balloons? Almost done! से ज़्यादा ऊपर एम नहीं कर पा रहा ना ये गया बूम
Oh, thank you, dear boy. You helped me complete this performance and fulfill one of my dearest wishes. Please, I'll gladly give you my most prized possession. दादाजी आपका नहीं चाहिए हम लोग को पोजीशन में पोजीशन बोला कि पोजीशन बोला सामान उमान का बात कर रहे तो चाहिए हमको जरूरत है बचाना पड़ेगा दादाजी हाँ ये शॉट्स मेरे को पता है किसका है हाँ आ गई Apologies for my late arrival to such a magnificent performance. Did I miss anything? अरे क्या नाम इसका नाम से नहीं कर पाते थे Oh my! What an honor to witness the beauty of our generous benefactor. Thank you, my lady, for rescuing this humble soul in his. You flatter me. The family's protection extends to all who stand by us. Might I say what a pleasure it is to see you again, Miss Carlotta. You have my heartfelt gratitude. यही दिक्कत है लोग नाम ऐसा होता ना क्यों Is everything going smoothly with your family? मेरे से pronounce नहीं होता बस सीधा बात Yes, thank you. The Order's scheme was uncovered as planned. Uncle Capulet was rescued, and I still owe you thanks for improvising with me in front of that priest. कुछ भी You've got a sharp mind. No pain, no gain, as grandfather used to say. I'm pleased we're on the same page. Your kindness is much appreciated. भाई फ्लर्ट कर रही है Montares won't forget this. In return, I'll share everything I know. I believe you've noticed that the Order has been undermining the family under the guise of its doctrines. Alienation, monopolization, just a few tricks up their sleeve. Their true motives, however, run deeper. Their alliance with the Fraxidus speaks volumes. While we don't know the full extent of their conspiracy, one thing is clear. Their sights are set on this year's carnival. The carnival is likely where you'll find clues about the Sentinel. Legend has it that the Sentinel, Imperator, has been secluded in the heavens, cut off from the mortal realm. The last record of the Sentinel is from the carnival a decade ago. At that time, the entire city was shrouded in mist. Ghosts roamed the streets. A dragon roared from the sky, and a sea behemoth raged, summoning towering waves. Do any clues come to mind? The clouds spreading, experiments to turn echoes, and the dragon's manipulation. The Order plans to recreate these disasters at this year's ceremony. सही पकड़े हैं The Order and the Fraxidus are allies. To prevent the Carnival's sabotage, we must stop them. But what is their motive? The Primus called it a divine punishment, and took the opportunity to appear as a savior. A perfect way to build legitimacy. The Order relies on the people's faith in the Sentinel. With the Sentinel's 10-year absence, faith in the Order has waned. They must be desperate to restore that trust. It is for this reason that the Order has been forced to revive the festival. Let's consider the implications. If the Carnival proceeds unhindered, how would it affect the Order? Obviously, all the holy maidens. The current Primus claims to be the Enlightened One, the Sentinel's Resonator. However, based on the prophecy we found in the ruins, this role is meant for the young maiden who is destined to heed the divine oracles during the carnival. The carnival is the only time humans can directly communicate with the Sentinel. Normally,
It's the Primus who conveys the Sentinel's words. A successful carnival offers a chance for citizens to meet the Sentinel in person. To sabotage it while still maintaining their authority, they partnered with the Fraxidus. The Fraxidus will cause chaos during the carnival, and the Order will swoop in as the saviors, restoring public trust just as they did before. So far, you've helped us crush 3 of their schemes, but one remains. We have evidence that the Cetus is being manipulated, and the Fraxidus are setting up their final plan. With their whereabouts unknown, we'll need to adapt our strategy as the carnival unfolds. From what I've noticed, you're not one to act passively or pin your hopes on others. You prefer to strike first and steer events in your favor. Winning the laurel might give you the chance to talk with the Sentinel. The Sentinel's resonator may also be present. So... God, this fastness. She must have this. Our aim has always been clear. To restore the Carnival to its former glory with a performance for the ages. If the Divine truly exists, would they wish to see their people living without freedom? Or witness a festival twisted into a tool for tyrants? If we win the laurel, we'll show that such punishment is whether divinity exists or not. We will fight for Raguna's freedom, where everyone has the right to live and pursue a future of their own choosing. The Montellis share this vision. Only in a free society can a fair and open market structure. However, the troop alone is too weak. The family is under close watch and thank you. I'm pleased we've reached an agreement once more. All right. What should we do now? Any plans? Since the Order intends to sabotage the Carnival and incite chaos amongst the guests, confronting them you've seen the troops' unique approach to combat, haven't you? That's... I can see our friend here is still a bit confused. No worries, my dear boy. We'll have a quick rehearsal before the Carnival begins. Speaking of which, Ms. Carlotta, would you honor us by joining our performance? Me? I do have some stage experience, though. Oh, I must don't know what challenges we'll face, so your help will be needed, Miss Carlotta. Plus, it's a chance for you to get to know our methods. If you insist. Wonderful! As the festivities continue, if you're both ready, please join us on the stage of the troop liner. Up and away! Fine. Our rehearsals are rather straightforward. No scripts, just pure intuition and our senses guiding us. That for our improvised comedy, we start with a theme. From there, we build... But with the limitless capacity of a human... Pardon my interruption. Well, something about... So, we draft a basic outline that is... And this time, our outline is... A kingdom is attacked, monsters run rampant, and the Demon King has kidnapped the whole... This outline holds special meaning. We want to pay tribute to the play once performed by the Blessed Maiden herself. Good people have their wishes fulfilled, heroes appear in a time of crisis, justice triumphs over evil. This is the tale the Blessed Maiden once told. And it's a universe... To me, the world is what I'm getting at. This rehearsal... All right. Next, I'll spin the prologue of our tale, setting the scene for how our brave heroes first crossed paths.
Once upon a time, a hero roamed the world. Undaunted by the lack of a divine vessel, he embarked on a perilous journey across tempestuous seas. Alone in the dark, a young girl of untethered spirit soared against towering barriers with wings of defiance. The winds of fate brought them together. As the world teetered on the brink of absolute darkness, they found solace in each other's gaze. Together they became unshakable allies, standing strong against the tides of fate. अचानक ऐसा बोलता है एकदम नरेट कर रहा है स्टोरी को देख रहे हो Even if light were to fade from the world and the stars cease to shine, they would still blaze like the sun forever. Yes. डांस कर रहे हैं अभी लोग यस W A S D D स्पेस तुरंत दबाना होता है नहीं वेट करें सब चले स्टोरी बढ़ रहा है ना बस Bravo! Bravo! Last वाला चूज करते हैं Seeing your chemistry, I decided to take a little creative liberty with the story. Anyway, it didn't stray too far from the outline, right? The thrill of improvisation is in its unpredictability. There's always a rush of excitement with every twist and turn. Your movements were seamless, elegant, and powerful. I'm confident you'll shine at the carnival. Thank you. It was all thanks to you. You inspired me and kept my spirits high. छोड़ना नहीं है ऑप्शन मिला इसका तो भाई छोड़ना ही नहीं है You'll master it in no time, I'm sure. All right, that's enough for today. Let's save the grand reveal for the carnival. Oh, and speaking of which, there's still something we need to prepare for you. You mean the essential item for the carnival performance? Don't worry. I've taken care of everything. Oh, so it's handled then. I can't wait to see it. I have a small gift for you. Let's head back to Raguna together. This way. Please follow me. Where are we going? ये भाई टव चलता हुआ टव Please allow. चलता हुआ टव उसमें लोग नहा रहे हो Up and away. आ रहे कोई दिक्कत नहीं ये तो वहाँ प्लेस आ गया ना शुरुआत में बताया Oh, dear Lady Carlotta, thank the Sentinel Carlotta you're से हम लोग यही मिले थे finally पहली back. बार I was just about to close up shop to prepare for tomorrow's carnival. You have completed my request, haven't you? Of course, Lady Carlotta. You should have more faith in my skills. Here you are. क्या बोलते पता नहीं मेरे A मास्क की मैं small बोल रहा token of my appreciation. आइस को ढकता है Abby, पूरा I have something for you as well. आइस से लेकर मुंह तक Wow, really? I get a gift too? Ha!
You're so nice. Ah, so that's why Lady Carlotta was so insistent on using only the finest materials and meticulous craftsmanship for this piece. आना पड़ेगा भाई, ये भी है क्यों? For a moment, I feared she lost faith in my skills and was plotting to hand over the shop to someone else. But now I see why this little creation was so important to you, Lady Carlotta. लेकिन इसको भी टीज कर रही है। Nyala, you do have a flair for dramatics. Anyway, why don't you unwrap it? शर्मा गई। This is... एबी के लिए। I took the liberty of having Nyala custom make this mask based on my impression of you. चल एबी के लिए दिया। I hope it suits your हम लोग taste. के लिए। Thank you। अच्छा, पहले वाला चूज करते हैं। I'm pleased you like it. The carnival is a splendid reverie, and the mask is its passport. May it help you navigate the carnival with ease, and let you enjoy it to your heart's content. We will, for sure. एबी। May I take a bit more of your time? Walk with me through Raguna tonight. I have some additional information to share with you. कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। टाइम ही टाइम है, बहुत फ्री टाइम है। मास्क के बारे में जान लेते हैं। कुछ तो लिखा हुआ पर यहाँ पर नहीं करते हैं। जितना बैकपैक ठीक है। कुछ to clear off. Take it off. उनका भी पहन सकते हैं क्या? The sapphire that crowns Solaris. Follow कर रहे हैं। The waters of Raguna serve as a mirror, reflecting the countless faces of this city, much like our own reflections. The people of Raguna possess a temperament akin to the tides. इधर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। There was a time when the currents swept us into the jaws of uncharted waters, where relentless storms and voracious waves awaited. My family has always been drawn to the thrill of a new voyage. One stormy night, fate decided to play a hand. What we discovered there on that island, the technology and novel ideas, was nothing short of a blessing in disguise. I assume you will seek more than just a free market. Our intentions Direct might से not be जाते as हैं grandiose or ominous as Point you पे think. जाते direct। We seek liberation. And to achieve it, we're pursuing... Legend has it that when people first arrived on this Background में तो music चल रहा है। Genesis Nexus was already here, welcoming them. The prevailing belief is that the Sentinel gifted us this technology. And despite nobody ever seeing the Sentinel in person, we took terminal. If the and it seems to me जल्दी the जल्दी order पार might करो। have spun. No, the hour grows late. I think of it as a... Once, the Blessed Maiden was यहाँ just से a कहानी simple story peasant girl. start होगा। During the Sentinel's gratitude rite, the young fleur-de-lis managed to sneak past the guards and drink the sacramental wine. Every drop. Perhaps it was the intoxicating wine in Eggletown, or simply her lack of experience with spirits. But she soon found herself quite drunk. Swaying on her feet, she ascended the ceremony's grand platform, lifted her threadbare dress, and began a rather ungainly dance. Seizing the sacred horn, she played a carefree folk tune, dodging the guards and weaving through the crowd with surprising agility. ये मेडन का दिन होली मेडन का बात ही हो रहा लग रहा है। The crowd, as if drawn by an unseen force, followed her lead, transforming the solemn Wild ceremony parade. into a wild parade of cheers and revelry. Naturally, the Order was less than pleased.
The pilgrim's sail did not yet exist, so Fleur-de-Lis faced 3 days of confinement. During that time, she used her prison walls as a canvas. That unforgettable day of disordered revelry left a lasting mark on all who witnessed it. वही जो हम लोग फिक्स किए थे Is शुरुआत it में. not remarkable? A rebellious girl chosen by the Sentinel to become the Blessed Maiden. If the Sentinel indeed permitted such a girl to serve as their spokesperson, it suggests that all this joyous revelry is not something they disdain. Perhaps they too enjoy poetry, painting, tears, laughter, romantic tales of nights, and dancing amidst crowds, much like ourselves. The people of this island came from diverse civilizations now lost to time. But through plays and tradition, they sought to preserve memories of their heritage. In the past, while the clash of cultures led to conflict, the Ragganese united to maintain this unity. We've always needed both a sentinel and a play based on a shared legend that gives us roles. ऐसे प्ले पे हम लोग अभी Yet प्ले this करने वाले play हैं. has endured for so long that we've become defined by our roles. Now, we yearn for a day when we can truly set aside our titles and positions, express our true selves, and join together in celebration. Yes, born from hope and idealism, it reminds the Ragganese of our initial vision of equality and freedom. It also affirms our true worth. While the Order's true intent, people revere the legends become. Speaking of this year's carnival will spark a flame. ठीक है. जल्दी जल्दी करते हैं. आज का स्ट्रीम में खाली पानी पड़ेगा. Rest well. Good night. गुड नाइट. आप लोग को नहीं. नाइट को गुड नाइट बोल रहा है. स्ट्रीम पे कुछ तो चल रहा है. खाना बना कर रेसिपी चल रहा था. I got to start a long stream was interrupted and saved Welcome. Lady Carlotta already notified us of your arrival. We are prepared to check you in very well. I'll escort you to your room immediately. After all you have been through your body, thanks for the rest. Wow! Is this real? Pinch me! I can't believe how different everything looks. So this is the carnival, huh? Yeah! The octopus मेरे को लगा serpent जैसा. मस्त है. कार्निवल ही दे रहा है. ठीक है, कार्निवल ही है. Wait to explore. Oh, by the way, it's been a while since we last saw Zani and Phoebe. Wonder what they're up to right now. All right, let's go. We should also keep an eye out for anything unusual along the way. Zani को देखे हम लोग एक बार थोड़ी पहले. Miss Margarita,
Is the order ready yet? Yeah, I was about to say, I have been waiting. Johnny. Miss Margarita, is the order ready yet? Yeah, I was about to say, I have been waiting quite... Sorry, we're swamped with orders. Becky and I are doing our best, but it's a bit chaotic. Becky's... No need to worry. Let me take a look. Ah, I see. Becky's just a bit overloaded with all the work. Oh, good morning, my friend. Enjoy the carnival. I'd love to, really. Look, see the smiles? However, it's crystal clear to me that keeping things running smoothly is a top priority. Lady Carlotta has already briefed me. Is the order ready yet? ये अपने पे भी मास्क है ना, देखना पड़ेगा। सब पहने हो तो हम भी पहनेंगे। Miss Margarita, is the order ready yet? Yeah, I was about to say, I have been waiting quite a while. क्यों नहीं पहन पाए? एवरी के लिए क्या? तो दिखा रहा है बट Miss Margarita, is the order ready yet? अरे तेरा ऑर्डर I was about to say, I have been waiting quite a while. तो इसका ऑर्डर छोड़ो। Is that Seamoss from the Pioneer Association? ठीक है चल। You want a picture with me? But... ठीक है पिक्चर ले लेंगे, फोटोग्राफर काम कर लेंगे। Well, thank you. इन लोगों का पिक्चर लेना है ना। ठीक है। Rover and Lady Phoebe. I've been capturing the Carnival's many beautiful moments. What brings you all together? You took this picture? Look at that composition and lighting. Who knew you had a knack for photography? Buddy, you look so happy. Whatever the reason, thanks for making this moment special. It's all thanks to Rover. He fulfilled Seamoss's wish. Just like us, Seamoss wants to savor every moment of the Carnival and leave with no regrets. The Sentinel cherishes their people, and as but we have our duty. I wish you कोई तो बॉक्स है। अच्छा इसका ये है। रुक जा भाई, जंप करके पार कर जाना। बस आ गई। You're here. Right, Clammy.
lively. For the Raganese, the carnival has always been an... The family is prepared. They'll support. We must remain vigilant. It's nearly... How do you feel? Ready to step into the spotlight? मौका नहीं छोड़ना है. Excellent. We have the skills. Now it's all about improvisation. The time has come. Let's go. Let's celebrate together. When freedom is unchecked, the insidious evil of division takes root. People of the Sentinel, do not lose yourselves in these fleeting pleasures. Remember what unites us all. भाई order का है. लग तो रहा है. खराब करने आ गए लोग. कार्निवल खराब करने आ गए. काम तो है नहीं लोगों का. Friends, why lead a life of restraints? ओह अच्छा ये लोग हैं. पार्ट सब है. तब कोई दिक्कत नहीं. Why not live like there's no tomorrow? परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है. Walls fall fast. All you free spirits, join us to set sail again. That woman. She's with the Fraxidus. I need to follow her and find out what she's planning. तो फॉलो करना. मत तो ही रहा. भाई सामने जाके फॉलो करेगा. Right this way. कुछ तो हुआ. कुछ तो हो रहा है. अब इसको फॉलो करना है मेरे पास. I've lost her again. Where is she trying to lead me? छत का टॉप. रूफटॉप लेके आ गई. Ah, we've arrived. Such a small world, isn't it? ये वाला तो मेरे को पता नहीं कौन है. Aw, don't fret. I've been invited to this grand feast as a conductor. Decadence, indulgence. That's the carnival. No need to worry. I won't disrupt their little daydream. Besides, we still have business. Now that you know one, how about I share a little story with you? A gesture of goodwill for our cooperation. Not interested. It's fine. I do appreciate the noble lady's sentiment. We're simply spread. Join us. ये तो ऑफर दे रहे सामने से. ज्वाइन होने का गलत समझ मत रही हो. लो कान सुनो.
The stage is set, and the curtain rises. ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये लग रहा है. The moment to dazzle has arrived. ये फ्लावर देख के किसी का चीज का याद नहीं आ रहा है आपको? इसका याद आ रहा है मेरे को. The magic is ready to unfold. As anticipated, the Fraxidus is on the move. Now, remember the rehearsal we did yesterday? All our preparations have led to this She intends to use those liqueurs. Everyone is in position. We'll manage the west. Phoebe, the main stage is all yours for the grand performance. I'll take care of the lighting and create the mood to make the performance stand out. ठीक है, performance पे हम लोग को छोड़ दो. Ready? The spotlight will be on you two. WSD यही कर रहे हैं ना? Let's go, partner. The curtain has been lifted. We can't keep our audience waiting. Then? Ladies and gentlemen, the grandest and most... Let us give a warm round of applause Oh my. as our actors now take the stage. An unending darkness cloaks the kingdom as monstrous beasts ravage the land. The holy maiden has been captured by the Demon King, and chaos descends. But lo, two valiant heroes step forth, accepting the minister's quest. Yes. क्या परफॉर्मेंस दिखाया? The heroes breach the first barrier, sweeping away the monsters within the city. इससे काम कर किसी को डाउट भी ना हो. परफॉर्मेंस के साथ साथ मॉन्स्टर को वो एक्सप्लेन कर रहा है. Now they advance toward the Demon King's castle, where peril awaits at every corner. What trials lie ahead? No wall can deter these free spirits. Even the stars seem to cheer on their... खत्म होने वाला. अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस दिखाता हूँ ना. Exercise caution. New enemies have appeared. The Demon King unleashes its minions, long awaiting these audacious intruders. परफॉर्मेंस दिखा के इन लोग को पीटना. भाई रोवर को Quick. रुक जा. I alone will decide whether it's for sure. I will be there for everyone as we Yeah, head they're toward weird our कर shared सकते हैं क्या future, रोवर? leaving the past behind. अच्छा अभी नहीं कर सकते ना. इस फाइट में नहीं कर सकते. Jump, jump, jump. Shoot down. इसके पास चलो. फिर इसके पास चलो. अरे भाई. Still recognize me? Swift and रोवर resolute. बोलो. ओ हाथ. ये हाथ कहाँ से आ गया? ठाकुर ये हाथ मेरे को दे दे. निकल निकल. Don't confront them head on. टाइमर लगा दिया भाई. ओ अच्छा बचना है. ये ऐसा बहुत. ओ डैमेज.
रास्ते से हट जाओ रोवर, रास्ते से हट जाओ रोवर, रास्ते से हट जाओ रोवर, डैमेज पड़ेगा नहीं तो। ओ लाइट बच गए। Hopefully this helps. कुछ तो दिखा रहा ऊपर। अच्छा ऊपर जा रहे हैं। Launch a fierce assault, intent on crushing the heroes and grinding them to dust. Jump. End has come. Back. Finish कर दे सबको, खत्म। एक बचा हुआ है। अब तो स्टोरी है ना। Watch out! Now! A sudden twist unbalanced the heroes. आ गया। Then at this crucial moment, पैरों। a mysterious figure enters the fray. जा। A divinity sent emissary? Or a spirit from the shadows, perhaps? She seems moved by their passion and righteousness. See her join the heroes' ranks. एक बचा है। How delightful. I await your shallow, bated breath. वाह, D1 को प्ले कर रही है ना। It seems the Demon King anticipated the hero's arrival and has gladly extended an invitation. With unyielding determination, the heroes accept the challenge. Oh भाई, ये तो कोई नया डिस्कॉर्ड है। नहीं सेंसर फाइट किया था क्या? The Demon King reveals itself at last, exposing its hideous visage and sharp fangs. The final showdown is nigh! See the conquering hero comes. The Demon King summons its foul army, poised for a climactic battle with the heroes. The victor will soon be revealed. पहले मिनियन को उठा। ओह अच्छा, पहले मिनियन को नहीं। अबे भाई, भाई D1 किन को उड़ाओ पहले। मिनियन जितना देर करेंगे उतना सामान होते रहेंगे। भाई ये तो और बढ़ गया यार। नहीं रोवर तू मर नहीं सकता रोवर। अरे रोवर के तो लग गए। हील भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा हील नहीं है क्या इसमें? अरे ये कैमरा बार क्यों खोल रहा है मेरा? Still recognize me? Amidst the clashing swords and the cries of the minions, the heroes face the Demon King. Victory belongs to the हीलिंग पावर नहीं चल रहा था। हील करने मिला वो। And now we await the Holy Maiden's return. And so we arrive at the happily ever after, yes? But we do not live in a fairy tale. There is no playwright to script a happy ending for us. What lies behind the curtain is but a cruel jest, a dark satire. Let me reveal the truth behind that idyllic ending. The Holy Maiden has long succumbed to darkness,
drawing power from a heretical force and leading her people into depravity. And the minister, having uncovered this truth, has vowed to root out this corruption himself. Things कैसा लग रहा है उसको? Come now, let us embrace the grand climax of this revelry. आई क्या ये? ओ भाई कुछ अलग ही है यार। हम लोग फाइट कर रहे हैं, सब पेंटिंग पे चली गई। फाइनली अपने लोग को मिल गया कैरेक्टर। Seems we've received another invitation. The final stage likely lies beyond this point. Don't worry. Brant will manage everything within the city and make sure the performance proceeds smoothly as planned. Let us मेरे को थोड़ा सही कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। The wildcat has sounded thrice, and the hedgehog four. The peculiar bird sings. The moment is upon us. साइडों का डायलॉग। O benevolent sorceress of realms unknown, I summon you. Grant us the just prophecy, and may fate favor us all. The night veils the world in darkness, while the feast captivates all. Yet you remain clear-eyed amidst this revelry. The honeyed wine has clouded their senses and quenched their flames of avarice. भाई 90 लेवल 90 भाई, हमको नहीं लगता जीत पाएंगे अब। हो गया काम, हो गया, हम लोग खत्म। डील भी नहीं कर पाएंगे। Abandon the trifles of sentiment, and you shall ascend the throne. To achieve this, a sacrifice of fresh blood is demanded, a purge of the Holy Maiden and all heretics. डैमेज तो दे रहा है रोवर, बट फिर भी लग नहीं रहा कि हम जीत पाएंगे। One with the sounds. ये कुछ तो इक्विप हुआ है इसमें। ये भाई तू बार बार ये क्यों हो जा रहा है मेरा? आप लोगों को नहीं दिख रहा, बट फिर भी मेरा यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। ये मोड़ सब खुल जा रहा है। हाँ इसको ले लो। Can't lose the rhythm. Mamma mia, avanti, figurati. Every story needs drama. I'll warm up the crowd. बाहर निकलो इससे। Unexpected plot twist. ओ भाई गंदा मारता है। Up we go, Pharaoh. Every story needs drama. नहीं कर सकते क्या भाई? अपना मूव भी यूज नहीं कर सकते, क्या फायदा? अब देखो, अब यूज कर, डैमेज नहीं पड़ा इसको, क्या फायदा? हाँ अब यूज कर सकते हैं। अभी खत्म कर।
sound. My king, what halts your advance? You have already tainted your feet in the river of blood. There is no retreat. भाई वो हीलिंग था ना, सही था। हीलिंग वाला जो लगता था ठीक है। Must be fortified with further transgressions. The soul must be steeled in bitterness. Thus, I unveil my second prophecy to dispel all illusions. No mortal shall inflict upon you even the slightest harm. And assuredly, you shall find favor with your people. हाँ ये चीज़ एक पहले कर देते तो क्या दिक्कत है? लो हो गया। इस कैरेक्टर को मेरे को अभी तक समझ भी नहीं आया, एम कैसे करेंगे? वेस्ट हो गया। ओ नहीं 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 नहीं। Still recognize me? Time to part ways. An absurd impudence. अरे ये कैरेक्टर है जो Is that it? Not even close. Improvise. Time to part ways. यही कैरेक्टर जो मेरे को जा सकती है। Brilliance lights the way. The world is mine. ये मेरे को समझ नहीं आया। ओ भाई। Still standing. An eye for an eye. नहीं 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 कैरेक्टर चेंज हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऐसा ऐसा ऐसे में बहुत खराब होता है यार, सही में। मेरे पास कोई कैरेक्टर ही नहीं है जो हील कर सके सबको। ऐसे तो हार जाएंगे आप। बस 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 बस। नहीं नहीं बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ बस सेट यार। Defy destiny, mock both life and death. कोई हीलिंग कैरेक्टर ही नहीं था मेरे पास। Abandon all doubt and grasp at unreachable hopes. कैसे करके मैं ग्राइंड किया फिर भी। Now, hear the third and final prophecy. Pleasure born of violence shall end in violence. अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं भाई नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अटक गई। अच्छा वापस स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस से भी काम कर लेंगे हम। अब दूसरी काम चलाएंगे। Time to part ways. You've crossed the wrong person. The stage is set. इस बार जितना हो सके उतना मारेंगे, पॉसिबल हो सके जितना। Is that it? बचा के रखने इसको। No hesitation. One with the sounds. One more time. नहीं रोवर रोवर नहीं रोवर 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 भाई बच के भाई। ये जो मेरा है ना डैशबोर्ड मेरा खुल जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। भाई ये तो गलत है, गलत है, ये गलत है। इसको लगा पहुंच जाएंगे। My compliments. Seren still recognize me. भाई गलत यार, बहुत गंदा मार रही है। Every story needs drama. Time for some crowd work. तो क्लोज तो
यार इससे बाहर निकल जाए, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। My compliment. Victory favors me. इस बार कैसे कैसे करके बचना है बस। Masterpiece complete. जितना हो सके उतना मारो इसको। Still recognize me. The end has come. One with the sounds. Striking shadow. Last chance. अरे भाई। Aerial stance. I'll warm up the crowd. अरे नहीं, पीछे पीछे हो जा, पीछे हो जाओ। Eye for an eye. लग गए। Swift and resolute. मेरे को कोई बचा नहीं सकता, लगता नहीं कोई बचा पाएगा मेरे को। बाय बाय रोवर भाई। One more time. I see your weakness. अरे क्लोज कॉम्बैट जाने, सामने तो जाने तब ना फाइट करेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इतना उड़ते रहेगी तो कहाँ से मारेंगे इसको। Mamma mia! Can't lose the rhythm. The spark सिट यार, fades. इस बार नहीं बचेंगे लग रहा है। रोवर को खत्म, रोवर भी खत्म हो गया, अब इसकी भी खत्म होने की बारी है। दूर दूर से फाइट करो भाई। Glory demands more. लग गया, खत्म, बच भी नहीं सकते इससे तो। Glory to the Montanas. क्यों? और वापस से मारना पड़ेगा यार। बा अटक क्यों जाता है ये ऐसे? पहले तो इसको हराना पड़ेगा, फिर अरे एक ये मेरा बार बार खुल जा रहा है ना इससे। No hesitate. One with the sounds. दोनों कैसे जा रहा है? Aerial stance. Mamma mia! Every story needs drama. पता ही नहीं चल रहा मैं अटैक कर किस पे रहा हूँ यार। इसमें तो बहुत गंदा लग रहा है सही में। Can't lose the rhythm. ये अटैक से बहुत गंदा अटैक है, Unexpected plot twist. मूव भी नहीं कर रहा है मेरे को। Time for a comeback. Such stubbornness. Stand down. इतने पीछे होके रहने का सोच रहे हैं। इतने पीछे होकर रहने के मारने की सोच रहे हैं, फिर भी नहीं पा रहा। पहले तो बैरियर ही नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इतना कहाँ से होगा? Time to still recognize me. You've crossed the wrong person. Running won't save me. Victory favors me. लग गए। I'm still standing. Masterpiece complete. An absurd तो impudence. कॉम्बो है ना, लग गया। Such stubbornness. Swift and resolute. The hour is upon us. कैसे कैसे करके कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जितने जल्दी स्विच हो जाएगा उतना जल्दी स्विच करके। जंप। Keep it together. Last chance. देख भाई निकल लो रोवर यहाँ से। Falter. पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे। The wrong person. Improvise.
improv performance. ऐसे लग नहीं रहा जीत पाएंगे. Every story needs blood. The spark fades. Still recognizing. नहीं जीत पाएंगे. बहुत गंदा आ रहा है. सारा का सारा कैरेक्टर अपना लेवल 40 का है. कितना वापस से स्टार्ट कर ले नहीं पाएगा ना. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वापस से आके फाइट कर लेगा. पीसी में नहीं हो पाएगा लग रहा है मेरे को. मोबाइल से ही करना पड़ेगा इसको क्लियर. मोबाइल से क्लियर करना पड़ेगा ये. क्या इवेंट अपडेट्स हैं तो देखा नहीं है. बहुत सारा इवेंट्स चल रहा है जो क्लेम कर लेता हूँ. इसे इवेंट्स कर सकते हैं. सही बाई चांस यही मैं कर रहा था. इतना गंदा गाइड बुक क्लेम करो सर. वीकली चैलेंज स्किल अपग्रेड मटेरियल. अच्छा स्किल अपग्रेड मटेरियल इस वीक मतलब आज तक था तब का. सॉरी गाइस कर नहीं पाया यार. तो भी क्लेम कर लेता हूँ. कुछ तो है स्टोर से औकात से बाहर है सब अपने. हाँ फ्री वाला नहीं छोड़ना बस. औकात से बाहर का है. क्या करें लोग देखते हैं. वापस सेलेक्ट करो 7%. लेवल 90 से फाइट करवा दिया सीधे डायरेक्ट. ये फिर पता चलेगा अगर मेरे को कि अगर कैरेक्टर भी मैक्स था ना तो बहुत खराब लगेगा. अटैक्स अच्छे खासे दिख रहे थे बट तेरी मान 4 में क्या कोशिश करूँगा. फिर पीसी में सही से हो नहीं पा रहे हैं. कोई भी सही से किया नहीं है अभी तक. एक्सप्लोरेशन तो 7%. बैकपैक में मिला था भाई को. लेवल 1 रैंक उसको बढ़ा सकते हैं. ऐसे फ्री कर सकते हैं. अभी तक नहीं किया. टाइटल क्या करेंगे इसका. गाइड क्वेश्चन
Humans are there. 4 eyes. यार तो स्ट्रीम ये भी एंड करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। कोशिश करेंगे कि इस टाइम तक इस लेवल को बीट कर चुके होंगे या फिर कोशिश करेंगे बीट करने का। तो बनने रहिए स्ट्रगल स्ट्रीमर के साथ, और मेरे स्ट्रगल को देखते ही यही बोल सकते हो, बस क्या करें। ये है ना, यहाँ तो हो जाता है, बट जब एनिमीज आते तब क्या होता है पता नहीं। एनिमीज के सामने क्या होता है। इधर दोस्त तो कर लेता आराम से भाई। सोच भी नहीं होता, बट फाइटिंग के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है इनको। हाँ, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उस टाइम हद से ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लास्ट गुड नाइट सभी को। वैसे तो कोई देख नहीं रहा है, बट फिर भी गुड नाइट।